Assalamualaikum to everyone. So because of due to rain, so I got late. So last हम क्या डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में? Any questions you prepared? Prepare करे questions. क्या तो doubt है? Questions have you prepared? The same questions. Any doubts? Okay.
Okay. So basic definitions and measurement. Okay. So measurement questions we will solve today. Okay. So question number one. In the following, the one which is not a physical quantity. In the following, okay. What happened in the following? In the following, which is not a physical quantity. Option A, power momentum. Okay. Power momentum latent heat. Okay. Power momentum latent heat radian. So चारों में से which is not the physical quantity. Okay. In the following which is not a physical quantity. Very good, radian. Okay. So because radian is the supplementary unit. Okay. So we know that physical quantity, anything which are measured. Okay. जो भी हमें measure करते हैं we call it as physical quantities. Power is a physical quantity, momentum is a physical quantity, latent is a physical quantity, but this is not a physical quantity. So option D is the correct one. Okay. The fundamental unit which is common in CGS and SI system. Okay. Question number 2. The fundamental unit which is common in CGS and SI system. The fundamental unit which is common in CGS and SI system. Okay, तो कौन सा कॉमन हो सकता है? Okay, option is meter, second, gram, all the above. Meter, second, gram, okay, all the above. So which is the correct option? Second is the okay, because there are three system of units. So what they are? Three system of unit. One is MKS, CGS, and FPS. So this MKS is the advanced system we call as SI system. Okay, तो SI system कुछ हमें क्या बोलते हैं? So MKS system बोलते हैं. It is advanced. Okay. अब यहाँ पर you know that what is M stand for meter and K stand for kilogram, S stands for second, and C stands for centimeter, gram, okay, second, and foot pound second. F stand for foot, and P for pound, and S for second. Look at this. In all these three, second is the common of the fundamental units. Okay, got it? Next, the fundamental unit are also called the fundamental units are called. Option A is base unit, B is derived unit, and C is system of units, and D is international system of unit, SI system of units. Okay, fundamental unit is called, किसे हमें fundamental unit बोलते हैं? So what are derived units? Then what are derived units? Correct. So derived units are taken from the fundamental units, but fundamental unit cannot, okay, it cannot be derived from this. तो यहाँ से हमें derive नहीं कर सकते, right? जैसे कि mass रहता है,
लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, सो ये सब क्या बोलते हैं हमें, दे आर द फंडामेंटल यूनिट्स, बेसिक। अब जैसे कि एग्जांपल कुछ भी प्रॉपर्टी ले, उसमें मास रहता है, अच्छे विदाउट मास वी कैन नॉट स्टडी, दैट इज द बेसिक एंड फंडामेंटल प्रॉपर्टी। यस सर नो? अब लेंथ, अब यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह बॉडी मूव हो रहा है, उसका बेसिक फंडामेंटल क्या है, लेंथ। तो हमें मास, लेंथ और टाइम का सब्स्टिट्यूट कुछ भी नहीं है। व्हाट इज माय पॉइंट? देयर इज नो सब्स्टिट्यूशन और देयर इज नो अल्टरनेटिव्स। ओके, बट हमारे पास देखो यहाँ पर, इफ यू टेक वेलोसिटी, वेलोसिटी का, वेलोसिटी इज द डिराइव यूनिट्स। सो वेलोसिटी में कैसा लिख सकते हैं फंडामेंटल यूनिट में? ओके, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो ये डिस्टेंस किस में आ जाता है? मीटर में आ जाता है। ये टाइम किस में आ जाता है? सेकंड में, दैट इज ओके एम एल टी। ओके, हियर एम जीरो एल वन टी पावर माइनस वन, करेक्ट। अब देखो यहाँ पर v इज द डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। इस डिराइव फिजिकल क्वांटिटी को हमें फंडामेंटल क्वांटिटी में लिख सकते हैं, बट फंडामेंटल क्वांटिटी आर नॉट डिराइव क्वांटिटीज, दे आर बेसिकली फंडामेंटल। उससे हमें क्या बोलते हैं? बेस यूनिट्स। ओके, सिस्टम ऑफ यूनिट तो नहीं हो सकता है, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस एंड एसआई सिस्टम तो नहीं हो सकता है। ओके, विच इज द करेक्ट वन? बेस यूनिट। ओके, तो बेस का मतलब इसका सब्स्टिट्यूशन कुछ भी नहीं है। ओके, दूसरा हमें कौन सा भी नहीं ले सकते, इज द बेस फंडामेंटल यूनिट्स। ओके, क्लियर? Next question number 4. Which, okay, which unit is not for length? Which unit is not for length? Option A. Okay, light year. Okay, parsec, angstrom, then nano. ठीक है, which is not for length? देखो, we have the four options. Okay, so light year, it is a distance, like light year का मतलब it is a distance travel from the space, the light travel, एक स्टार से दूसरे स्टार को जब लाइट ट्रैवल होता नहीं, we called as light year. Okay, यहाँ पर एंगस्ट्रॉम, व्हाट इज देखो लाइट ईयर का एंगस्ट्रॉम करके बोले तो 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, करेक्ट। सो यहाँ मीटर आ गए, मीटर का मतलब क्या? दिस इज द यूनिट ऑफ लेंथ। ओके, नेक्स्ट नैनो होगा, तो नैनो का मतलब 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर होगा, दिस आल्सो। और एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या? इट इज मेजर द, लाइक द लाइट ट्रैवलिंग इन स्पेस। ओके, जैसे कि अब बहुत सारे स्टार्स रहती हैं, द लाइट ट्रैवल इन स्पेस, हाउ वी कैन मेजर, वी कॉल एज अ लाइट ईयर। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर अब जो भी हम स्टार्स देखते हैं, अब सन इज द नियरेस्ट स्टार टू अस, अब सन में से कैसा, सूरज से कैसा रोशनी निकलती है, तो ये मतलब इट टेक्स 8 मिनट टू रीच द अर्थ, मतलब अप्रोक्सीमेटली कितना लगता है? 8 मिनट लगता है रीच करने के वास्ते। बट सन जैसे ऐसे बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं यूनिवर्स में, स्काई में, मतलब यूनिवर्स ऑफ स्टार्स रहती हैं, तो इससे हर स्टार बेस लाइट एमिट कर सकता है। समझ में आ रहा? द सन इज द नियरेस्ट स्टार टू अस। ओके, सो इट विल एमिट द लाइट। ओके, द लाइट विल रीच ऑन द अर्थ सरफेस or nearby planets, approximately it will take 8 minutes. Okay, but similarly there is other stars also are there, मतलब ऐसे दूसरे स्टार्स भी रहते हैं, बट वो स्टार्स आने के वास्ते भी क्या होता है? इट विल टेक मेनी इयर्स। ओके, अब समझे, यहाँ पर एक स्टार रहता है। ओके, तो ये स्टार भी क्या करता है? लाइट को एमिट करता है, एस आर नो? जो भी लाइट ट्रैवल होता नहीं, तो ये डिस्टेंस कुछ हमें क्या करते हैं? सो लाइट ईयर। समझ में आ रहा है? सो इट इज अ डिस्टेंस ट्रैवल, इट इज अ डिस्टेंस ट्रैवल विद द लाइट। ओके, इन स्पेस, मतलब स्पेस में जो लाइट ट्रैवल होता है उसे हमें क्या बोलते हैं? वी कॉल्ड एज लाइट ईयर। बट ये भी क्या होता है? डिस्टेंस होगा, ये भी डिस्टेंस होगा, ये भी डिस्टेंस होगा, बट पार सेक मतलब सेकंड आ गया यहाँ पर वर्ड में, पार सेक का मतलब इट इज सेकंड। सो सेकंड इज द नॉट यूनिट ऑफ लेंथ, सो विच इज द करेक्ट ऑप्शन? बी। SI unit of coefficient of viscosity, SI unit of
Okay, SI unit of coefficient of viscosity. So option A is Pascal second power minus 1. Option B is Pascal second. Option C is Newton meter square unit per velocity. Newton per meter square unit velocity. Okay. Then it is Newton meter unit velocity gradient. Newton per meter unit velocity gradient. Okay. So out of this four option, which is the coefficient of viscosity? Okay. So what is the formula for coefficient of viscosity? Force which is equal to eta A dv by dx. Correct. समझ में आ रहा है? So this is the formula for. अब यहाँ से eta viscosity which is equal to eta होना so f into dx upon. Okay. So eta f into a यहाँ पर dv by dx. Okay, dv by dx. So eta which is equal to, what is the unit of force? Number the unit of force is Newton, area unit is meter square, dv by dx is the velocity gradient. अब यहाँ पर देखो, अभी look at this formula, इसका यूनिट क्या बनता है? फोर्स का यूनिट न्यूटन, न्यूटन, और एरिया मीटर स्क्वायर. ओके, मीटर स्क्वायर. Okay, into velocity gradient. Correct. So which is, okay, option C is the correct one. Okay, which of the following cannot be expressed as 9 centimeter square? So which cannot be expressed, which cannot be expressed as 9 centimeter square, as 9 centimeter square minus 2. इसका मतलब they have given four quantities. Option 4 option is given. तो इसमें चारों में से कौन सा 9 सेंटीमीटर नहीं है? पहले हमने 9 सेंटीमीटर क्या समझ में आना. ओके, यहाँ पर देखो 9 सेंटीमीटर इज द CGS यूनिट. इट इज द CGS यूनिट. ओके, अब जैसे कि हमें फोर्स बोलते नहीं, फोर्स को, ओके, फोर्स का CGS यूनिट क्या बनता है? 9 सेंटीमीटर पावर माइनस 2. यस. ओके, फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी, बट इसका एस यूनिट क्या है? फोर्स का एस यूनिट आपको न्यूटन कर को बोलते हैं हमें. एस यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन. किस में? एस यूनिट में. अगर तुम्हें ये CGS यूनिट में बोले तो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है. गॉट इट. अब इसमें से ऑप्शन क्या देकर ही. ओके, सो ऑप्शन इज प्रेशर, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस, प्रेशर, longitudinal stress. Option C is longitudinal strain. Option D is Young's modulus of elasticity. ठीक है. Which cannot be expressed as 9 centimeter square. इसमें कौन सा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर करो बोल को हमें वेरीफाई करना. ओके, व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ऑप्शन? प्रेशर. ओके, सो प्रेशर. सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर प्रेशर? फोर्स पर यूनिट एरिया. फोर्स पर यूनिट एरिया. ओके, अब यहाँ पर फोर्स का यूनिट क्या हो सकता है? डाइन. ओके, अब यहाँ पर एक्चुअली ये जो यूनिट बनता नहीं, यहाँ पर देखो
फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स का यूनिट क्या बन सकता है, डाइन। एरिया का यूनिट क्या बन सकता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का यूनिट ये किसमें, सीजीएस में। एसए में इसे क्या बोलती, फोर्स का एसए यूनिट को न्यूटन, एरिया का एसए यूनिट को मीटर स्क्वायर। समझ में, सीजीएस का मतलब क्या, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ओके, अब एरिया इज द लेंथ, एरिया इज द लेंथ। अब ये लेंथ किससे मेजर करती है हमें, सेंटीमीटर, तो क्या ना इसे सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है, तो फोर्स का यूनिट डाइन, एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब यहां पर देखो तो ये सही आ रहा है यहां पर, यस सर नो। सो यहाँ पर डाइन अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर ऊपर है तो माइनस हो जाता है, करेक्ट। इसका मतलब ये सही है, करेक्ट, डाइन सेंटीमीटर को ये प्रूव कर रहा है। नेक्स्ट बी ऑप्शन, बी ऑप्शन में क्या आ रहा है, ओके, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेस, stress is the ratio of force per unit area, stress is the ratio of, okay, stress which is equal to force per unit area। तो यहां पर भी सेम आ रहा है, ओके, इसका मतलब ये भी सही है। देखो फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर का भी फोर्स पर यूनिट एरिया, ओके, स्ट्रेस इट इज द रेशियो ऑफ it is the ratio of it is the ratio of force per unit area of the body, okay, deforming force per unit area, तो इसे तो हमें स्ट्रेस बोलते हैं। ओके, एंड ये दिस इज आल्सो करेक्ट आंसर, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। एंड ऑप्शन सी, ओके, ऑप्शन सी देखो, स्ट्रेन, स्ट्रेन का यूनिट बन सकता है क्या, स्ट्रेन इज द डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ओके, तो कई को डायमेंशनलेस क्वांटिटी करके बोले तो, ओके, ओके, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेन, it is the ratio of change in length to the original length, change in length to the original length। so change in length को dl करके लिख सकता हूं मैं, ओरिजिनल लेंथ को एल करके लिख सकता हूं मैं, तो ये डीएल को भी मीटर से मेजर करते, सो इसे भी मीटर को मेजर करते, सो मीटर मीटर विल कैंसिल, नो यूनिट, इट इज अ डायमेंशनल और इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। क्लियर। नेक्स्ट, इसका मतलब देखो यहां पर कुछ भी यूनिट नहीं है तो ये गलत हो रहा है। ओके, इसका मतलब कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, मतलब ये आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट वन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ऑप्शन मतलब स्ट्रेन का यूनिट नहीं है, तो यूनिट नहीं रहा तो उसे 9 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं चाहता उससे। ओके, नेक्स्ट यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, व्हाट इज इलास्टिसिटी, ऑप्शन डी, ये भी चेक कर लेंगे। व्हाट इज ऑप्शन डी, इलास्टिसिटी, लाइक हुक्स लॉ, इट इज द रेशियो ऑफ, दैट इज वी कॉल्ड एज, नहीं क्या बोलते हैं, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, हुक्स लॉ में आता तुमने। ओके, हुक्स लॉ स्टेट दैट इट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द स्ट्रेन, करेक्ट, स्ट्रेस टू द स्ट्रेन। ओके, स्ट्रेस क्या हो जाता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेन का कुछ तो यूनिट नहीं बनता, अगेन फोर्स पर यूनिट एरिया क्या हो जा रहा है, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। A, B and D, all the options are 9 centimeter square, but option C is not a 9 centimeter square. तो option C आपको correct answer हो सकता है। Got it? Next, kilowatt hour is the unit of. We'll go to the next one. Question number 7. Okay, kilowatt hour is the unit of. तो किसका यूनिट हो सकता है ये, ऑप्शन ए पावर, एनर्जी, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट। पावर, एनर्जी, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट। सो डेफिनेटली टाइम तो नहीं हो सकता और एनर्जी भी तो नहीं हो सकता। ओके, सो यहाँ पर वी हैव द क्लोजेस्ट ऑप्शन वन इज पावर, इलेक्ट्रिक करंट। ओके, किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ। ओके, सो व्हाट इज द फॉर्म ऑफ आवर पावर, पावर इक्वल टू वर्क डन टू द टाइम टेकन, इट इज द रेशियो ऑफ वर्क डन टू द टाइम टेकन। और पावर का एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट इज वाट, और इसे डब्ल्यू करके बोल को कंसीडर करते हैं, एसआई यूनिट इज वाट। ओके, सो हियर अब ये वैट को हमें क्या करना, वैट इज द एसआई यूनिट। ओके, अब ये एसआई यूनिट को विल राइट एज 1 किलोवाट आवर लिख सकते हैं इसे। वैट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, जो वैट कर को हमें बोलते हैं, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, बट जो हमें घरों में करंट का इस्तेमाल करते हैं, करेक्ट, वी आर यूजिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब जो घरों में इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करते हैं उसे हमें क्या बोलते हैं, जो भी लाइक इलेक्ट्रिक मंथ में जो भी बिल आता है,
लाइक हाउ मच यूनिट्स वी हैव कंज्यूम्ड। तो हर जितना यूनिट कंज्यूम होकर आती तुम्हें ये वैट में नहीं आता, बट किस में आता है, तुम्हें किलो वैट में आता है। अगर तुम्हें घरों में इलेक्ट्रिसिटी बिल देखे दो तुम्हें, तो उसमें मेंशन होकर था यूनिट किलोवाट में रहता है, 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट बोल को। ओके, यहाँ पर जो किलोवाट कर को आ रहा है, ओके, इट इज द कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, पावर कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो पावर इज द राइट आंसर। तो क्या था, पावर इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, okay, the one which is not the unit of length, the one which is not the unit of length, मतलब कौन सा यूनिट का ऑप्शन नहीं है। ओके, सो ऑप्शन ए इज एंगस्ट्रॉम, यूनिट माइक्रोन, पार्सेक, स्टेडियन। एंगस्ट्रॉम, पार्सेक, ओके, स्ट्रेडियन, ओके, माइक्रोन। ओके, इस करेक्ट, पार्सेक इज द, बिकॉज यहाँ पर सेकेंड आ रहा है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। ओके, यस, स्ट्रेडियन इज द सॉलिड एंगल। ओके, देर आर टू टाइप्स ऑफ सप्लीमेंट्री यूनिट्स, दो टाइप्स ऑफ सप्लीमेंट्री, एक को प्लेन एंगल, एक को सॉलिड एंगल रहता है। ओके, तो व्हाट इज प्लेन एंगल? प्लेन एंगल, ओके, इट इज द एंगल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये सेंटर ऑफ द सर्कल इज वो, इसका रेडियस ये। ओके, अब समझो पार्टिकल यहाँ रहता है, इनिशियल पॉइंट इज एट ए, तो ए से बी को द पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी। ओके, तो दिस इज कॉल्ड एज आर्क लेंथ। ओके, सो प्लेन एंगल क्या बनता है, थीटा विच इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ओके, ये थीटा है, यहाँ पर थीटा किसमें मेजर करते हैं हमें, रेडियन में। थीटा इज मेजर्ड इन रेडियन। ओके, तो इसे हमें आर ए डी कर को शॉर्ट में भी बोल सकते हैं। ओके, वन मोर एंगल वी हैव द सॉलिड एंगल। ओके, सो इट इज द सॉलिड एंगल। ओके, सॉलिड का मतलब क्या, कुछ भी एक ऐसा बॉडी लेना है, ऐसा मेटेरियल लेना है, इट इज द सॉलिड वन। जैसे एग्जांपल वाटरमेलन स्फेरिकल शेप में रहता है। ओके, अब समझो, अब हमें वाटरमेलन को लेने से पहले क्या करते हैं, सो दिस इज, इमेजिन दिस द शेप ऑफ द वाटरमेलन। ओके, अब हमें कभी भी वाटरमेलन को लेने से पहले क्या करते हैं, फर्स्ट विल टेस्ट, नहीं तो क्या करते हैं नो, ऐसा एक, दे विल टेक दिस स्मॉल पोर्शन। ओके, मतलब यहाँ से इतने का निकाल को नहीं क्या करते हैं, दे विल चेक एंड गिव। तो ऐसा से लगा तो खराब होगा, तो इट इज वेस्ट, नहीं तो उससे क्या करते हैं, चेक कर को जो भी लेकर आते हैं, देखो इनो रिमूव कर को, मतलब यहाँ पर जो एंगल बन रहा नहीं, सो दिस एंगल इज कॉल्ड अ सॉलिड एंगल। यहाँ पर देखो देयर इज अ वेरी स्मॉलेस्ट एंगल, फिर यहाँ एरिया ज्यादा आ जा रहा है, फिर यहाँ पर और एरिया ज्यादा आ जा रहा है, यहाँ पर एरिया ज्यादा आ रहा है, करेक्ट। मतलब एज में देखो, एज में क्या हो रहा है, इसका एरिया बहुत कम है, तो जैसे मतलब ऊपर आने आने इसका एरिया क्या हो रहा है, ज्यादा कवर हो जा रहा है। लाइक लेट मी गिव अनदर एग्जांपल, लाइक कोन आइसक्रीम। अब जो कोन आइसक्रीम में क्या रहता है, तो बॉटम में क्या रहता है, तुम ना उसका एरिया बहुत छोटा रहता है, तो जैसे जैसे ऊपर आता है तो क्या होता है, इट विल ज्यादा एरिया आ जाता है। सो इट इज कॉल्ड एज अ सॉलिड। ओके, और भी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स रहती, जैसे कि बेलपूरी खाती, नहीं अब उसमें पुड़ा बन को देते नहीं, अब वो पुड़ा बन को देते क्या होता है, बट वहां जो बॉटम में रहता है वो इट विल टेक ओनली द स्मॉलेस्ट, मतलब बहुत सम कम क्वांटिटी रहता है उसमें, मतलब पूरे ऊपर आते आते क्या होता है, पूरा पूरे एरिया में ज्यादा स्प्रेड होकर होता है। व्हाट इज माय पॉइंट, तो इसे क्या बोलते हैं, हमें वी कॉल्ड एज अ सॉलिड एंगल। ओके, तो सॉलिड एंगल को, ओके, थीटा विच इज इक्वल टू एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर आता है। समझ में आ रहा है ये? अब यहाँ पर इसका यूनिट जो बनता है, हाँ, दिस इज द प्लेन एंगल, डीएल। डीएल बोल सकते हैं, डीएक्स बोल सकते हैं, डीआर बोल सकते हैं। ओके, एंड ए इज एरिया एंड आर स्क्वायर इज द रेडियस। देखो यहाँ पर सॉलिड एंगल बने तो बिकॉज एरिया के ऊपर बनने वाला एंगल ये, समझ में आती है, पूरा क्या रहता है, एरिया। जैसे कि अब हमें वाटरमेलन यहाँ, मतलब विल कट द, अब समझो इतने का वाटरमेलन कट कर को ही। ओके, अब देखो यहाँ पर एंगल बन रहा है। ओके,
और यहाँ पर एंगल और ज्यादा बन रहा है, इसका मतलब और ज्यादा एरिया कवर हो रहा है। यहाँ पर और ज्यादा एंगल बन रहा है, और ज्यादा एरिया कवर हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो मतलब जो भी एंगल बन रहा है सॉलिड में बन रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ए सॉलिड एंगल। ओके, इट इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सॉलिड स्फीयर। ओके, इंटरसेप्शन ऑफ एरिया, मतलब इस सॉलिड स्फीयर में जो एंगल बनता है, ओके, वो एंगल किसके ऊपर इंटरसेप्ट होता है? उसके एरिया के ऊपर इंटरसेप्ट होता है। अगर एरिया मतलब यहाँ का एरिया ले रही है ना, डीए हो जाता है, छोटा एरिया, तो यहाँ ले रही है, उसका एरिया देखो और ज्यादा होगा, और ज्यादा होगा, और ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है? सो द फॉर्मूला इज एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड एज सॉलिड एंगल। बट ए प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज सप्लीमेंट्री यूनिट्स, दे आर नॉट द फंडामेंटल यूनिट्स और दे आर नॉट द डिराइव्ड यूनिट्स। तो इसे क्या बोलते हैं हमें? सप्लीमेंट्री यूनिट्स। क्लियर द पॉइंट? ओके, बट ये तुम ना सीटी में वेर एवर जहां पर आर्क लेंथ आता है या जो भी एक सर्कुलर बॉडी प्लेन एंगल आता है, वहां पर हमें इसके कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। ओके, इट इज अ वेरी बेसिक एंड फंडामेंटल ओनली। गॉट इट? अच्छा, सॉल्व करेंगे इसके पहले का क्वेश्चन ना। ओके, पारसेक। ओके, यहाँ पर देखो एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। फिर से स्ट्रेडियन, ओके, एंगल थीटा। ओके, सो पारसेक, सो इट इज अ सेकंड। माइक्रोन, माइक्रोन का क्या बनता है? 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर। माइक्रो और माइक्रोन माइनस 6 मीटर बन सकता है। ओके, ओके, क्वेश्चन नंबर 9, द डेंसिटी ऑफ, ओके, match the list one with list 2, select the correct answer by using codes which is given below. Okay, यहाँ पर देखो they are given. Okay, so this is column 1 and this side is column 2. Okay, so this is A, B, C and D. यहाँ पर P, Q, R, S. Okay, so two columns are given, match the following. जैसे two columns देकर हैं, तो column 1 में 4 options, column 2 में 4 options. तो options are distance between earth and sun. Okay, distance between earth and sun. Next, interatomic distance in crystals. Interatomic distance, interatomic distance कर बोले तो मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस। ओके, द मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, एक मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल के बीच में मिनिमम जितना डिस्टेंस रहता है, वी कॉल्ड एज। अब एक सॉलिड बॉडी रहता है। ओके, अब एक यहाँ पर एक मॉलिक्यूल रहता है, इसके बाद और एक मॉलिक्यूल रहता है। बट ये दो मॉलिक्यूल्स क्या रहते हैं, उसका जो डिस्टेंस रहता है वी कॉल्ड एज द इंटरएटॉमिक मॉलिक्यूल्स और इंटरएटॉमिक डिस्टेंस ऑफ क्रिस्टल्स बोलते हैं इसे। ओके, ऑप्शन सी इज साइज ऑफ न्यूक्लियस। Okay, option D is wavelength of infrared laser. Wavelength of infrared laser. Okay, अब इसमें से this is micron. Okay, micron, angstrom, light year, Fermi. Okay, तो कौन सा सही है, मैच करो इससे। कॉलम 1 विद कॉलम 2. ओके, ए आर. ओके, सो ए आर के साथ मैच होता है, देन बी बी एस के साथ। फर्मी का मतलब क्या? किसका स्मॉलेस्ट डिस्टेंस? स्मॉलेस्ट डिस्टेंस वी नो, कौन से
जैसे कि देखो फेर्मी का मतलब 10 टू द पावर ऑफ -15 मीटर, करेक्ट, 10 टू द पावर ऑफ -15 मीटर। अब ये एटम रहता है, दिस इज एन एटम, ओके, इसके एटम का सेंटर न्यूक्लियस रहता है, ओके, सो इसका जो सेंटर ऑफ, ओके, सेंटर ऑफ एन एटम से लेकर ये जो डिस्टेंस रेडियस बनता है, दिस रेडियस इज 10 टू द पावर ऑफ -10 मीटर। किसका? ओके, एटम के स्ट्रक्चर, एटम के सेंटर से लेकर तक एटम के ऑर्बिट तक का रेडियस कितना होता है? 10 ऑफ -15 मीटर। बट इसका भी रेडियस बनता ना, न्यूक्लियस का भी, ओके, इसका डिस्टेंस है चाको 10 ऑफ -15 मीटर। अब ये फेर्मी किसका? यस, सी किस में आ जाता है? यस, सो ए बी सी आपको यस का हो जाता है। अच्छा, सोच को बोलो। ओके, सो इंटर एटॉमिक बी आको क्यू, बी आको क्यू, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बोले तो, ओके, सो 10 ऑफ -10 मीटर मतलब मॉलिक्यूल्स का बीच का डिस्टेंस 10 ऑफ -10, सो ऑप्शन डी आको माइक्रोन, पी। सो दिस आर द करेक्ट ऑर्डर, ठीक है, तुम अलग अलग देकर आते हैं, ये क्यू को मैच होकर रहता है, बी एस को मैच होकर रहता है, नहीं तो द करेक्ट वन इज द सीक्वेंस जो मैं यहां देकर हूं, सो इट विल मैच दिस वन। ओके, डन। So next question number 10. Okay, significant figures. Okay, today we'll discuss about significant figures. अब so far जो डिस्कस करते हैं मेजरमेंट्स के बारे में, अब आपको सिग्निफिकेंट के टॉपिक सॉल्व करेंगे। ओके, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.06900, 06900 इज, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर इसके? करेक्ट, सो 4 सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब अकॉर्डिंग टू द रूल फर्स्ट क्लास में जो डिस्कस करे थे नहीं, ओके, सो इसमें एक रूल, इफ द नंबर इज लेस देन 1, इफ द नंबर इज लेस देन 1, लेफ्ट साइड जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट, ओके, तो राइट साइड में जितने भी लीडिंग जीरोस आते हैं आफ्टर नॉन जीरो डिजिट्स दे आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, ओके, सो 4। नेक्स्ट, which of the following numerical value have 3 significant figures? ओके, तो यहां पर 3 significant figures किसके ही करो, which are the following numbers have 3 significant figures? Okay, option A is 0.030, option B is 3.033, option C is 30.30, option D is 0.300। यस, ऑप्शन डी इज, यहाँ पर ये तो नहीं हो सकता, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 2 हो गए, इसके भी सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो गए, ओके, जीरोस आर अकरिंग बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ओके, यहाँ पर भी अगेन इट इज 4, बट हमने क्वेश्चन में आको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, मोर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर शोज द मोर, ओके, मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स, अगर ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर है तो, मोर सिग्निफिकेंट फिगर है तो इन्हें क्या शो करता है? ऑप्शन ए इज, okay, error, number of figures, value, accuracy, तो 4 ऑप्शन, ए का को एरर, ओके, ऑप्शन बी इज वैल्यू, ऑप्शन सी इज accuracy, ऑप्शन डी इज नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब एक नंबर में ज्यादा सिग्निफिकेंट, अब यहां पर देखो, ओके, लाइक एग्जांपल इफ आई राइट हियर 100, I will write, okay, I'll write 12.00, I'll write 12.0, I'll write 12, तीनों में क्या फर्क है?
इसका मतलब ए बी सेंटीमीटर रिच, ए बी सेंटीमीटर, ए बी सेंटीमीटर रिच, करेक्ट। बट तीनों का मीनिंग एक ही है, इसे भी हमें 12H बोलते हैं, ऑल थ्री आर 12, ओके। बट व्हाट इज द डिफरेंस हियर वी हैव, यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज 4, यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज 3, यहाँ पर 2, ओके। इसका मतलब जो नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा है इट गिव्स मोर एक्यूरेसी, समझ में आ रहा है? तो जो मेजरमेंट का नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर ग्रेटर इट विल गिव मोर एक्यूरेसी, सो ऑप्शन सी, ओके। मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स गिव दैट मोर एक्यूरेसी। Okay. If a measured quantity has n significant figures, take down. If a measured quantity has, if a measured quantity has n significant figures, n significant figures, the reliable digits in it, the reliable digits in it, the reliable digits, ओके। देखो रिलायबल डिजिट का मतलब क्या, इट इज अनसर्टन, अनसर्टन डिजिट, इसे क्या बोलते हैं हमें, अनसर्टन डिजिट। तो अनसर्टन डिजिट का तो क्या, जैसे कि एग्जांपल आई राइट हियर, ओके। सो 12.034, कुछ नंबर लिखो यहाँ पर, कुछ भी नंबर, कुछ भी नंबर हो सकता है, बट यहाँ लास्ट डिजिट रहता नहीं, इन्हें आपको क्या बनता है, इट इज द रिलायबल डिजिट। कुछ भी नंबर में जो लास्ट जो नंबर आता है इन्हें क्या बनता है, रिलायबल डिजिट, ओके। अगर ये नंबर 4 है, अगर ये नंबर 4 है, इसके पहले वाला नंबर देखना, राउंड ऑफ करके बोलते नहीं हमें, व्हेन यू आर राइटिंग राउंड ऑफ नंबर। अब यहाँ पर देखना 3 है, अब इससे राउंड ऑफ करके लिखे करने होता है, तो विल राइट द सेम नंबर, ओके। अगर यहाँ नंबर 5 और 5 के ग्रेटर 6 आए, तो ये नंबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ 1 लिख सकते हैं, 0 की जगह 1 लिख सकते हैं, राउंड ऑफ करके। बट दिस नंबर इज लेस देन, okay, so less than 5, so we'll take as it is, okay। तो रिलायबल डिजिट का मतलब क्या, अनसर्टन, वो नंबर कुछ भी हो सकता है, ओके। इसके लिए ऑप्शन आपको, ओके, n, b is 2n, c is n minus 1, okay, n by 2, d is n by 2, ओके। अब देखो कुछ भी नंबर आते हैं हमें क्या करना, अब इसमें से माइनस करना, ये ना नंबर 4 minus 1 which is equal to 3, दिस इज द ऑप्शन, ओके। कुछ भी जो रिलायबल नंबर आता है उसमें रिलायबल डिजिट आता है, जो लास्ट डिजिट आता है उसमें से क्या करना तुम्हें, -1 कर लेना, समझ में आ रहा, -1 कर क्या मिलता है, ओके। यहाँ पर 3, 0.33 हो जाता है, खाली लास्ट डिजिट कुछ क्या करना तुम्हें, माइनस करना, सो ओके। अब ऑप्शन सी इज द रिलायबल डिजिट। Okay, take down the other question. Two numbers, a equal to 0.92, two numbers a equals 0.92, b equals 0.08, 0.08 are given, the number of significant figures present the result after the following operation। इसमें क्या करना, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आफ्टर द ऑपरेशन, समझ में आ रहा है? देखो दो नंबर देकर ही दे हैव गिवन द वैल्यूज, ओके। हमें क्या कैलकुलेट करना है इसमें, ओके, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आफ्टर द ऑपरेशन। तो इसमें क्या देकर ही करके बोले तो a प्लस बी, ओके, a प्लस बी, एक बार इसे ऐड करना, a माइनस बी, a इंटू बी, a बाई बी। सो दे हैव गिवन 4 फॉलोइंग ऑपरेशंस, मतलब फंक्शन देकर ही, तो इसे पूरे कर को हमें इसका ऑप्शन लेना, ओके। समझ में आ रहा है? दो नंबर देकर ही इसे ऐड करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना। तो डिवाइड कर को इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रही हैं बोल को बोलना। ऑप्शन ए इज
3 2 2 2 3 2 2 2. Option B is 3 3 2 2. Option C is 3 2 1 1. Option D is all 2. Do it. इसका क्या रहा है? देखो डायरेक्ट ऐड करो, एक बार ऐड करना, एक बार सबट्रैक्ट करना, एक बार मल्टीप्लाई करना। ऑप्शन ए, डी, ओ डी बिकम्स। ऐड कर क्या रहा है तुमने? ऐड करे तो ऐड करे, पूरा पूरे टोटल नंबर बोलो। 1.00। मतलब अब तुम ऐड कर कुछ ना लिख रही है, इसका मतलब देयर सिग्निफिकेंट फिगर्स। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, इसमें 3 बोले तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ऑप्शन में। अब नेक्स्ट ए माइनस बी करो। 0.0884। तो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर इज 0.84 आता है। 12 minus 8 is 4। हाँ, सो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना? 2 आ रहा है। ओके, सो 3 2 मतलब ए नहीं हो सकता। ऑप्शन ए और सी में आ सकता है। ओके, सो ए इंटू बी करो। 0.736। ओके, यहां पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स? 3 सिग्निफिकेंट फिगर, बट ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। ओके, ये तो नहीं हो सकता। अब इसमें कितने होना? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहां पर देखो 2 है, यहां पर 1 है। ओके, अब यहां पर क्या हो रहा है देखो इसमें, अब जो नंबर देकर ही ए और बी जो वैल्यू देकर ही नहीं, इसमें लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कौन सा? इसका लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर करेक्ट। इसका ना लिस्ट मतलब लिस्ट का तो क्या कम सिग्निफिकेंट फिगर, इसका क्या बनता है? 1। ओके, अब इसे क्या करना हमें? ओके, इस वैल्यू को 0. ओके 0.07 वी शुड टेक। अब यहां पर देखो ये जो रूल बनता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए रूल इज एप्लीकेबल, बट मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए रूल एप्लीकेबल नहीं होता। कई को करके बोले तो यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 2। यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट हैं? 1। मतलब हम ना यहाँ पर ज्यादा आ जा रहा हम ना, तो इसे एप्लीकेबल नहीं कर सकते हमें। व्हाट इज माय पॉइंट? यहाँ 2 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पर 1 सिग्निफिकेंट फिगर, बट हम ना एक तो 2 आना, नहीं तो 1 आना, बट हम ना यहाँ 3 आ रहा है। तो हमें मतलब सिर्फ ये 2 के वास्ते, मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड के वास्ते हमें दूसरा रूल अप्लाई करना पड़ता है। क्या करके बोले तो ओके, अब जो भी वैल्यू देकर ही इसमें से सबसे छोटा नंबर लिख लेना। सो सबसे छोटा नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? 1। ओके, मतलब 0 पॉइंट, इसका तो 0.0 का तो वैल्यू नहीं है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना रहा है? 1। ओके, अब यहां पर जो नंबर है नहीं, हम ना इसे क्या करना, एक सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर लिखना। तो क्या है नंबर यहाँ? इसे दो डिजिट को छोड़ डालो, तो क्या लिखना? इसे लिखना 0.07। नो, व्हाट इज द सिग्निफिकेंट फिगर? यस, सो 1 इज द सिग्निफिकेंट फिगर। अब देखो कौन सा ऑप्शन आ रहा है? तो ये नहीं आ रहा, सी आ रहा है। अब इसे भी आप लेकर को देखो, सेम रूल, डिवाइड करो इसे ए बाई बी, 11.5। ओके, हैं कितने डिजिट्स आ रही? 3 डिजिट्स आ रही, 3 डिजिट्स आ रही है यहाँ। अब ये भी एप्लीकेबल नहीं हो सकता, तो लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितना इसका? 1। ओके, अब इससे राउंड ऑफ करके लिखे कितना? ओके, तो इससे राउंड करके लिखे तो ओके, सो 1 भी राइट। समझ में आ रहा है? अब यहां पर राउंड करके लिखे तो क्या लिखना हमें? 0.1 वी विल राइट। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर आपको 1। इसका मतलब जो नंबर तुम्हें मल्टीप्लाई करती या डिवाइड करती, तो तुम्हारा सिग्निफिकेंट फिगर चेंज हो जाता है।
जब होते सिस्टम को क्वेश्चन में तुम ना जो वैल्यू देख रही उसमें सबसे छोटा वैल्यू का सिग्निफिकेंट फिगर क्या है देखना। सपोज यहाँ पर 3 देखो रहा है तो यहाँ पर 2 देखो रहा है, कौन सा लेना, 2 का लेना तुम्हें। ओके, अब यहाँ पर क्या था तुम्हारा सिग्निफिकेंट फिगर इज दिस वन विच इज द करेक्ट ऑप्शन सी। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, next question. If L which is equal to 2.331 centimeter, B which is equal to 2.1 centimeter, 2.1 centimeter, L plus B which is equal to क्या बनता ऑप्शन 4.4 centimeter. Option A is option B 4.43, 4.43 4 centimeter. कौन सा ऑप्शन? ओके, यस, कई को ऐसा बी आ रहा है ऑप्शन। अभी स्टार्ट करने से क्या आ रहा है? ओके, सो हियर 3 1 3 plus 1 is 4. Okay, 2 plus 2 is 4. 4.431 समझ में आ रहा है सेंटीमीटर। अब लास्ट डिजिट क्या हुआ? रिलेबल डिजिट हुआ ये लास्ट डिजिट आपको रिलेबल डिजिट। इसका मतलब क्या? इट इज लेस देन 5। लेस देन 5 कर बोल को राउंड ऑफ कर बोलिए क्या आ रहा है तुमना 4.43 सेंटीमीटर। करेक्ट। डन। नेक्स्ट वन। ओके, द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 1.41 सेंटीमीटर। ओके, अब समझो एक स्फीयर है, इस स्फीयर का रेडियस जो बन रहा है 1.41 सेंटीमीटर, 41 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ द स्फीयर। ओके, इट्स वॉल्यूम टू एन अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज। ओके, इस वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? अब एक स्फीयर है, स्फीयर का रेडियस 1.41 सेंटीमीटर। ओके, इस पूरे स्फीयर का वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? समझ में आ रहा है? ओके, ऑप्शन ए ऑप्शन 11.7 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन बी 117 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन सी 11.736, ऑप्शन डी इज 11.7। ठीक है, अब ये आंसर कैसा आता तुमने? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर? वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। सो v विच इज इक्वल टू 4/3 को डिवाइड करो 3.14 इंटू आर क्यूब 1.41 क्यूब। सिंपलीफाई करो, गेट एनी वन ऑफ द ऑप्शन। क्लियर? ठीक है, सॉल्व करो। विल कंटिन्यू आफ्टर द नमाज। What is the number of significant figures in? Okay, so 9.062 into 10 to the power of 20. Okay, 2 4 3 1। इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं को बोल को बोलना। ओके, सो विल कंटिन्यू आफ्टर द नमाज।
So this was still actually I also bring this up. So rain practice formula rain. What's up? कौन सा बोलो? ये 1 2 3 4 जो भी नोटेशन साइड की नोटेशन को इग्नोर कर रहा हूँ अब देखो तुमने साइड ट्वेंटी का मतलब क्या ओके जब एक साइंटिफिक नोटेशन है तो इट इज वेरी बिगेस्ट नंबर ओके तो उससे आते हैं तो नंबर को इग्नोर करेगा ऑप्शन 4 एक्चुअली इंग्लिश अपडेट टॉपिक है assertion reason of statement mistake तो करेक्ट कोर्स हो जाएगा एक्चुअली वांट टू फिनिश चैप्टर प्लस टेकन 3 क्लासेस तो आज फिनिश करेंगे वो का और फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोग फिनिश कर लो स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर अल्लाह हाफिज़